more into it, which we'll understand today. Anyone else who wants to share their thoughts, although आप लोगों ने messages में डाला है, but then I want you to just speak up about it. इज इट अबाउट कि जो आपको अचीव करना है आप फ्यूचर में उसको ऑलरेडी थैंक्स कर रहे हो इन प्रेजेंट, कि मेरा ये जो भी आपका गोल है यू आर थैंकिंग द यूनिवर्स इन एडवांस कि आपको अचीव हो गया, एंड वो उस इमोशन को पकड़ के आप जब लिखते हो कुछ भी कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया है, तो वो बड़ा मतलब आपको आज के लिए सेट कर देता है, मतलब जो फ्यूचर का आपका होता है ना, तो आपको अभी से Right, एनर्जी और वाइब क्रिएट कर देता है, यार मिल गया ये चीज। इट्स मोर लाइक right. कि ग्रेटिट्यूड आज ही शो कर दो जो आपने अभी, आपको जो चाहिए, आई गेस। Yeah, it's one of the types. Yes. आई Okay. थिंक जर्नलिंग दो मेन चीजों से होता है। फर्स्ट इज पास्ट टेंस, जो कुछ भी हो गया है तुम्हारे लाइफ में, तो वो नोट डाउन करना, बट इन अ पॉजिटिव वे। Like Okay. whatever has happened in some supposedly at the end of the day, I'm writing down whatever happened during my day, but while writing it down I can get a different perspective about what happened. Second is to look into the future, like whatever I want in my life I can write down in a present tense, so that I'll have that in front of me in writing, that I want to achieve Yeah. these things, and as I'm writing this I'm manifesting it in my life. That's also true. So see, आप लोगों ने तीन लोगों ने शेयर करा है, इन तीनों लोगों का कितना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक है। सो हर किसी ने एक टाइप का जर्नलिंग शेयर करा। सो लाइक व्हाट आई हैव डन। हम लोग जो अफर्मेशंस डेली बेसिस पे करते हैं या कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो एक रिटर्न फॉर्म में सिंपली वे से लिखना, वो भी एक जर्नलिंग का भी पार्ट होता है शायद। यस यस। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन टुडे। अभी सब लोगों को थोड़ा बिट्स एंड पीसेस ऑफ नॉलेज है। ठीक है। मे बी यू नो मोर अबाउट इट, यू आर नॉट जस्ट शेयरिंग इट है, बट देन आई हैव कंबाइंड थिंग्स। ओके, देन यू कैन सिलेक्ट योर ओन मेथड ऑफ जर्नलिंग एंड यू कैन स्टार्ट विद इट। Okay, I'll speak in English now. Okay, so let's just start with the presentation. I have made a very girly presentation because most of the people are here. Most of the people are females over here. So yeah. So first of all, let's start with a positive mindset that even if this workshop is free, we will take something out of it. Okay, because there is a lot of knowledge. Next thing, I'll share certain things, whichever one you feel is important, or whichever affirmation you feel, or whichever picture you feel like, it's good to look at, or I resonate with this picture, you can take a screenshot. Okay. And if you want me to share this presentation over the end, I'll do that as well. Okay, so let's just start with a positive mindset that after this workshop and once we enter into the new year, we will attract a lot of miracles and a lot of positive things into our life. Done? Okay. So, okay, English. So, you know, there is always a time when we start something. Maybe you all are hearing about journaling since a lot of time. ठीक है, that this is journaling, how it is done, this, that over Instagram reels and everywhere. But then you never started it. Or sometimes it happens that we are very fascinated with things. We buy journals, we buy notebooks, we write 1 or 2 days, and then back to normal, back to our shell. That no, this is not my thing. Okay, so trust the process of new beginnings. Okay, it's not like you will write something today and it will come true the very next day. It's not like that. It's not gonna be like that. Okay, even in Bhagavad Gita, you must have heard or studied about the process of karma. You always have to do your own karma to attract new beginnings. Okay, it's not just about writing. Okay, you have to do your thing to attract that particular thing into your life. Okay, so what exactly is journaling? Is it a diary? Is it something that you put on your wall and then you just look at it and then bang on, you just attract it? No. See, journaling is
writing down your emotions, your feelings, everything that is going inside you onto a paper. Okay. Now tell me one thing. How many of you are such a person जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है? Your mind is empty at any point of time. ऐसा होता है कभी? No, right? Mostly लोगों के साथ नहीं होता. जिसके साथ होता है that person is already a saint. Okay? तो of course हमारे दिमाग में हमेशा every time, every single moment there are a lot of thoughts which are going on. Let's say I am just hosting this workshop, but then I am just roaming around at my home place कि मेरे पापा क्या कर रहे होंगे, मेरे भाई क्या कर रहा होगा, हर्षदा की लाइफ में क्या चल रहा होगा, ये ऐसे सैड क्यों बैठी है. ठीक है. सो देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स दैट आर गोइंग एट द बैक एंड. सो अभी क्या हो रहा है, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई एम डूइंग समथिंग एल्स. ओके. सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल बट आवर माइंड goes far away from what we can think. Okay. अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. लेट्स से मैं अभी कुछ पॉजिटिव कर रही हूँ, मैं अभी जर्नलिंग कर रही हूँ एंड आई एम राइटिंग दैट आई विल अट्रैक्ट 50K फॉलोअर्स इन ईयर 2025. एंड मन में मैं सोच रही हूँ, मेरा माइंड मेरे को बोल रहा है ऐसे थोड़ी ना होता है, 50K थोड़ी ना हो जाएंगे. ठीक है. सो इट्स ऑलवेज अबाउट योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वॉट एवर काइंड ऑफ थॉट्स. ओके. So journaling is basically writing down your thoughts, your emotions. आज सासू माँ ने मुझे क्या बोल दिया, और यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, ननन समथिंग समथिंग भाभी, उन्होंने मुझे क्या बोल दिया, मुझे हर्ट हो गया, उन्होंने इज अ प्रोसेस ऑफ जर्नलिंग. Now, it's not that you will always write down your emotions. Okay, journaling, although journaling is a process of writing, but then after that you have to be mindful about it. That मैंने क्या लिखा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है. ठीक है. Like Harshada said, it's about past, present and future. ठीक है. So हो सकता है past में something has happened with me. Let's say my mother-in-law has said something to me that कीर्ति आज आपने सिंदूर नहीं लगाया, यू हैव नॉट वेयर दैट सिंदूर. ओके. और मेरे दिमाग में वही चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है कि उन्होंने मेरे को टोक दिया. ठीक है. और मैं कुछ भी कर रही हूँ वही बैक ऑफ द माइंड मेरे चले जा रहा है. नाउ आई वांट टू रिलीज दैट इमोशन, तो मैंने उसके बारे में जर्नल करना शुरू कर दिया. आई स्टार्टेड जर्नलिंग अबाउट इट दैट माय मदर इन लॉ हैज सेड दिस टू मी, दैट टू मी, दिस. But then I also have to just read it out that what is the actual problem. The actual problem lies within me, that I am overthinking about it. Okay. Now, problem is there in front of you. Now you have to find out the solution. Either you want to let it go, either you want to address it with her that I forgot about it or I don't want to wear it. Okay. So it's not just about your problems. It's about the solution as well. How you will make it better in upcoming future. Okay. So journaling का purpose क्या है? Journaling का purpose है to, get solution towards something, to attract certain things, to release your emotions, to be in a better mind space, physical space, emotional space, everything. Okay. You can attract each and everything with the help of journaling. Trust me when I say this, you can attract each and everything. You will not even know about it कि कैसे हो गया, but you will attract it. Yesterday only, I was writing about something. I was preparing for this workshop and I was writing about something. And कल रात को ही I got that thing. And it's not a small thing. ओके. आई एक्चुअली मैनिफेस्टेड दैट थिंग. आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा. यू थिंक अबाउट समथिंग और वो सच्ची हो जाता है. ठीक है. देन वी से कुछ और ही मांग लिया होता. वी शुड हैव विश फॉर समथिंग एल्स. ओके. सो दैट इज व्हाई
it is very important that you stay in a positive mindset to attract positive things. You never know कब कौन सी चीज सच हो जाए. हिंदी में हम बोलते हैं ना कि अम, जुबान पे सरस्वती बैठी हुई थी. ठीक है, तो ये सच हो गया, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो. सो यू डोंट नो वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जब वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी. पॉजिटिव 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 माइंडसेट. और ऐसा नहीं है कि आपने जर्नलिंग स्टार्ट करी, यू कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि अभी लेट्स से दीपल ने आज बोला कि मैं सुबह उठ के जर्नलिंग किया करूंगी. ठीक है, और दीपल ने 4-5 दिन जर्नलिंग करी. देन ऑन द फिफ्थ डे शी डजंट फील लाइक डूइंग इट, बट शी feels like writing something else, not the normal affirmations, but she feels like something else, writing something else. So it's all about developing a habit. It's not that you have to follow just one method and go on with that particular method throughout your lifetime. You have to be very flexible with your own self, okay? Just figure out what you are feeling today. Are you feeling like, releasing something from yourself today? You can just script it down. Okay, you are feeling very low and you want something positive to happen today. Just write some affirmations which will set your mind. So we'll discuss about less methods of journaling. Okay, these are just some very common methods that you can use in your day-to-day life, which will not be very difficult. Okay, so let's start with the first one. Before that, do you guys have to ask something like any question, any suggestion, anything? Or should I move on to the next one? कोई एक क्वेश्चन नहीं है. नहीं, मेरा एक लास्ट ईयर का इशू हुआ था कि आई जर्नल्ड लाइक फॉर 2 months एंड आफ्टर दैट देयर केम अ टाइम वेयर आई वाज लाइक हाँ ठीक है, आज नहीं हुआ कल करेंगे, आज नहीं हुआ कल करेंगे. एंड आफ्टर लाइक इट हैपेंड फॉर अ वीक, आई वाज लाइक कि जान देना, वीक का गैप पड़ गया है तो अभी क्यों ही करना. तो Yeah, this happens a lot. हाँ, so I had gotten everything, but there was this guilt while I started again writing during second half, like around July. I started again, but there was this guilt ki there was so much gap. Now whatever I'm writing, will it happen in real life? Don't worry, we'll fix it. You can journal Okay, about those things as well. okay, Okay? yes, So yeah, that's why I said in the beginning only that be very flexible. Do not just blame yourself कि अभी तो ये पत्थर की लकीर हो गई है और मैंने नहीं किया तो I have crossed some Lakshman rekha or something. No, it's not like that. Be very flexible. We are humans and we experience a lot of emotions every day. Every day भी नहीं. अभी एक सेकंड मैं हैप्पी हूँ, नेक्स्ट सेकंड किसी ने मुझे देख के मुंह बना दिया तो मैं सैड हो जाऊंगी. Okay, so we'll not stay in the same mindset at every point of time, right? So be flexible. Do not blame yourself for anything, but just know that I have to do something. If not today, let's do it tomorrow. But then let's do something. Okay, let's not just keep on blaming and blaming and blaming. Okay, so let's start with the first type, which is very common. We do it on regular basis, knowingly, unknowingly, we do it on regular basis, which is like to-do journaling or bullet journaling, which we call. Okay, so if you want, you can write it down, or I'll just share a PDF towards the end if you guys want. Okay, but then you can always write it down and take the screenshots and all. Okay, so first one is to-do journal or bullet journaling. Okay, so a lot of you are working, a lot of you do your own business, a lot of you are housewives, but then this is something which we do on regular basis. Let's say you are working in an office or you have got a lot of tasks. So what you'll do, you'll just jot it down that these all things I have to do today. Okay, so just making a to-do list. So
Why we do that? Because when we have a lot of things to do, हमारे दिमाग में वही चलता रहता है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, ऐसा भी करना है. So it just gives a build up कि इतना सारा कुछ करना है, अभी कुछ नहीं हुआ है. ठीक है. So normally you can just make a to-do list or what we call as bullet journaling कि write down the important things which you want to do today and let's just highlight or cut down the things which you have already done. Okay. For example, I always have this, to do thing on my desk. So I write whatever I have to do and then I just mark whatever I have done. Okay. And jo bhi bach gaya, I'll plan for tomorrow. Even if you are a housewife, uh, फ्रिज पर आजकल सब लोग मैग्नेट लगाने लग गए हैं grocery list ka that we have to buy all these things, this that. So this is a very 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 common way of journaling. This is not even journaling, it's just that you are just you know decluttering your mind of thoughts from whatever you need to do. Maybe वो चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा लग रही हो, but when you jot it down, it's just four things. Okay. What else you can do is you can prioritize things कि चार चीजें मुझे करनी है. दिस इज द थिंग विच इज मोस्ट प्रायोर टू मी, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट. सो दिस यू कैन डू एवरी मॉर्निंग इफ यू वांट. ठीक है. जस्ट हैव योर कप ऑफ कॉफी, विद दैट यू कैन जस्ट जॉट इट डाउन दैट आज मुझे क्या क्या करना है. सिंपल इनफ. बट इसका बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग, चाहे थोड़ा थोड़ा ही, बट यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग. ठीक है. सेकंड, आपका माइंड बहुत ज्यादा डीक्लटर हो जाएगा. यू विल हैव अ लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि मुझे आज ये करना है, ये मैंने कर लिया एंड आई एम सॉर्टेड फॉर टुडे. यू कैन ऑल्सो मेंशन टाइम कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये करना है, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये करना है. सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. ओके. इट सीम्स वेरी स्मॉल बट देन इट डज अ ग्रेट जॉब. ओके. आप स्टार्ट करके देखो. जरूरी नहीं है आपको ऐसा फैंसी नोटपैड लाना है, कुछ लाना है. नो, you can just jot it down on your cell phone as well. ठीक है. Any doubt in this one? This is like very simple day to day thing. ठीक है. आप इस journaling की मदद से अपना goals वगैरह भी, which we'll discuss in the next type of journaling, तो अपना goals वगैरह भी ट्रैक कर सकते हो कि मंडे को मैंने ये सोचा था करने के लिए, मैंने किया या नहीं करा. सो यू विल क्वेश्चन योर ओन सेल्फ कि मैं रोज 10 चीजें लिखता हूँ बट मैं दो ही चीजें करती हूँ. So what am I doing? बाकी टाइम मेरा कहाँ जा रहा है? You will organize things, okay? You will be more organized in your headspace and around yourself as well. Okay? Any doubt till now? Simple? Okay. Let's just move towards the next thing, which is goal setting. Okay. Now, how many of you have taken some New Year resolutions? 2025 में मुझे ये करना है, वो करना है, ये अचीव करना है. लाइक मैंने डिसाइड करा है कि मुझे दिस मच अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स आई वांट टू अचीव. सो आई एम श्योर आप सभी ने कुछ ना कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए होंगे, राइट? और अभी से ही लिए होंगे. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे, दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ ट्रैकिंग योर न्यू रेजोल्यूशन. जूम यूजर कौन है ये? आयुषी आई गेस. ओके. अगर रेजोल्यूशन नहीं भी लिए, कुछ तो डिसाइड करा होगा कि मुझे अपनी जिंदगी में ये करना है. You must have some goals in your life. If you don't have, you must have. Okay. Going with one day at a time is fine, but then where are you going. ठीक है. आपको शिमला जाना है, but you are just moving one step at a time towards somewhere else. So that's not how life goes, right? Even if you take one step at a time, you should know what where you are moving. Okay.
So, this is the second way of journaling, which is like productivity journal बोल लो या goal oriented journal बोल लो, wherein you give yourself some goals कि इस वीक में मुझे ये अचीव करना है, इस मंथ में मुझे ये अचीव करना है. I want to achieve these many things in 3 months. I want to achieve these many things in next 6 months, or your annual goals. ठीक है? So if you can see this picture, in this picture, there are daily goals, there are weekly goals, monthly, 3 months, 6 months, and annual. So you have to just break it down. So if I want to achieve 50K followers, तो वो ऐसा सोनपरी वाला चीज तो नहीं होगा ना कि सोनपरी ने छड़ी घुमाई और आई हैव अचीव 50K फॉलोअर्स. आई हैव टू मेक सम एफर्ट्स, राइट? तो एफर्ट्स मुझे मंथली के एफर्ट करना है, दैट आई हैव टू यू नो conduct some workshops, I have to conduct some classes so that I attract more audience. ठीक है? मुझे डेली क्या करना है? आई हैव टू पोस्ट अ रील डेली. सो जस्ट ब्रेक इट डाउन कि ठीक है ये तो अचीव करना है बट कैसे करना है. सो जस्ट जॉटिंग डाउन योर जर्नी टू अचीव अ सर्टेन गोल. So now, as you all have certain goals to reach in year 2025, you can just break your goals down and organize कि next 3 months में मुझे कितना अचीव करना है, 6 में कितना करना है, 12 में कितना करना है, so on and so forth. Right? अभी इससे इससे फायदा क्या मिलेगा? Anyone? क्या फायदा मिल सकता है आपको इस चीज से? Anyone who wants to volunteer and say? कोई भी गोल जो एनुअल में बहुत बड़ा लग रहा है ना, सो वी कैन डिवाइड देम इनटू, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में उसको स्प्रिंट बोलते हैं. तो वी Right. कैन, हाँ, तो वी कैन डिवाइड देम, and those minute goals are achievable and piled up, they contribute to the bigger goal, which is like in this case annual goal. Right. Right. So if I say like I have worked into banking sector, ठीक है, तो we have some annual goals. तो अभी एनुअली हमको बोल दिया कि 10 करोड़ का आपको इंश्योरेंस करना है या 10 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट लेके आना है. अभी 10 करोड़ इज लाइक अ बिग अमाउंट, बट देन व्हेन यू ब्रेक इट डाउन मंथली, वीकली, बाई वीकली, it's kind of achievable, right? So that's the major point कि बड़ा गोल देख के don't scare yourself. Just break it down to make it simpler and achievable. ठीक है? This is also very simple, and this is something which you can do every day or every month. You can make a ritual for yourself and just do it every week, every month, every 2 weeks, however you like it. But then make sure you are going in the right direction. This is the major thing that इस चीज से आपका ट्रैक होगा कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो. ठीक है? Any doubt in this particular kind of journaling? No doubt. Any other doubt till now? I see a lot of cameras are off. Guys, please switch on your camera. Okay, let's just move to next type. Okay, so this is a very good quotation, which says the secret of your future is hidden in your daily routine. ठीक है? So if you want to like motivate yourself or something, you can just take a screenshot of this thing, or you can always find something on the Pinterest which will motivate you कि आप वो चीज रोज रोज कर सको. ठीक है? Let's move on to the next type, which is scripting, or in other words we also call it brain dump. ठीक है? अभी like I asked in the starting as well, if there is someone who can sit somewhere just looking at the wall with no thought in their mind, and you guys said that no, we can't do that. ठीक है? There will always be something which will go on in your mind. Always, always, always.
ठीक है? So what you can do, this is something which you can do on daily basis, or this is something which you can do anytime, any day you feel like. Okay, so what you need to do is, this is an example. So like you are feeling very low today. आपको किसी ने कुछ बोल दिया, and there are a lot of thoughts which are going on in your mind. आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, ठीक है? आपको समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, या मैं मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू. एंजाइटी these days is a very common word. Okay, it's not just a word, it's a mental state though. ठीक है? So this is something which will help you to come out of that anxious mental state. So what you need to do, just take a notepad, just take your phone or any paper and start writing down. Do not think what you are writing, do not check for your spelling mistake, grammatical mistake, this, that. No, just start writing it down. Whatever is going on in your mind, just write it down. Okay, which we call as script. Script करो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, अच्छा बुरा, नेगेटिव, एंशियस, वॉट एवर इट इज, जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन. ठीक है? तो अभी इससे क्या होगा ना, आपका दिमाग आपके सामने पड़ा है कि दिस ऑल इज गोइंग ऑन इन माई माइंड. ठीक है? ऑल्सो इट इज अ सेइंग कि जब भी हम बहुत ज्यादा लो स्टेट में होते हैं ना, और हम वो चीज लिखते हैं ना, इट रिलीजेस फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है? आई डोंट नो इफ यू गाइज नो अबाउट इट और नॉट, बट जब भी हम कुछ चीज लिखते हैं, इट कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है? सो आप वो चीजें लिखो, जो भी चल रहा है आपके दिमाग में, अच्छा बुरा, सब कुछ लिख डालो. ठीक है? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना आप लिखना चाहते हो, चाहे 10 लाइन्स लिखना चाहते हो, जस्ट राइट इट डाउन. ओके? उसके बाद जस्ट टेक अ मोमेंट, ड्रिंक सम वाटर एंड देन रीड इट आउट कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में. ठीक है? देन अगर आप इस पिक्चर में देखो, ठीक है, इसमें क्या है कि इसने बहुत सारा कुछ लिख दिया कि क्या 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 चल रहा है मेरे माइंड में, इवन इफ इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, समथिंग विच यू आर गिल्टी अबाउट, समथिंग विच इज अफेक्टिंग यू नेगेटिवली. ठीक है? उसके बाद यू कैन जस्ट, दिस इज समथिंग विच विल चेंज. ओके, तो जैसे इसने टॉप 3, इजी 3, नेक्स्ट 3 लिखे, आप इस तरह से भी कर सकते हो. बट देन यू विल जस्ट फिगर आउट कि क्या चीजें आपको रखनी है अपने दिमाग में, कुछ पॉजिटिव है दैट यू वांट टू कीप, क्या चीजें आपको रिलीज करनी है, देन दिस इज यूजलेस, मैं यूजलेस चीजें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, आई वांट टू रिलीज दीज इमोशंस. ठीक है? और क्या चीजें इतना ज्यादा मैटर नहीं करती हैं. ठीक है? तो यू विल जस्ट नो थ्रू दिस थिंग कि भाई क्या चल रहा है मेरे दिमाग में. समटाइम्स वी जस्ट थिंक माइंडलेसली, एक थॉट आता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना पंजाबी में. ठीक है? तो वो ख्याली पुलाव हम पकाते जाते हैं, पकाते जाते हैं, फिर वो एक नेगेटिव जोन में जाके खत्म हो जाता है. और क्या करता है वो ख्याली पुलाव, हमको एक नेगेटिव स्टेट में लाके छोड़ देता है. ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू एंड ऑर्गेनाइज योर माइंड. ठीक है? उसके बाद आपको जो रिलीज करना है, जस्ट डू योर रिचुअल्स एंड रिलीज इट. जो आपको अपने अंदर रखना है, जस्ट कीप इट विथ यू. अब इससे होगा क्या? नाउ यू गाइज विल टेल मी दैट हाउ दिस ब्रेन डंप थिंग विल हेल्प यू, एंड नाउ someone else will speak up. Okay, let's hear it out from Hema. How will this brain dump thing you think will help you? First of all, whatever the thoughts, overthinking is, it will come down. After we write down the overthink, too much of clutter in the brains will come down. Only then when the brain function is like a traffic jam, everybody Right. just wants to rush. When the traffic jam, the things of mind is shorted down, then only we can think about anything peacefully and analyze or
check whether what's positive, what's negative, why should we give time to so much of thoughts, or what should we prioritize in life. Right. Sometimes we think of something very stupid. हम कुछ भी Mhm. stupid सोच रहे होते हैं और फिर when we'll just read about it, we'll just question ourselves कि इस चीज पे मैं परेशान हो रही थी, ये क्या घटिया चीज मैं सोच रही थी. So Exactly. it will declutter your mind. Yes. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ जर्नलिंग जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं बोलूंगी करने को, बिकॉज इवन इफ यू फील लाइक डूइंग इट रेगुलरली यू कैन, बट लाइक वंस अ वीक डीक्लटर योर माइंड. अभी रूम भी अगर गंदा पड़ा है ना, आपको उसमें जाके एक घुटन फील होगी कि क्या गंदा पड़ा है सब. बट देन व्हेन यू विल एंटर अ रूम, उसमें से अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, यू विल फील वेरी गुड इन दैट रूम, वेरी पॉजिटिव इन दैट रूम. The same goes with your mind. Okay, clear? Any Yes. doubt till now? Or shall we move ahead? Okay, let's move ahead to the next form of journaling, which is okay, you can do this thing as well, which takes me towards the next form of journaling. तो अभी इसने क्या किया इस इंसान ने, I have found all these images through Pinterest, okay? तो इस इंसान ने क्या करा है, इसका माइंड में बहुत किचपिच 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 चल रहा है, I have to do this that. तो this person has jotted down everything which is going on in his or her mind. Okay. See, this person is also thinking about journaling as well. एक टेंशन है माइंड में, वो मैंने सोचा था जर्नल करनी है, मैंने करी ही नहीं है. ठीक है. सो now that he or she knows that whatever is going on in my mind, I have jotted it down. Now you can just frame out कि मुझे आज के दिन में क्या करना है, which I can do later in my day, which I can do tomorrow, next week, whatever. But then things are in front of you and you are very clear कि आज मुझे ये दो चीजें करनी है, कल मुझे ये चार चीजें करनी है. So you'll be like, okay, it's manageable. I can do it, right? Okay, let's move ahead to the fourth type of journaling, which is like very interesting kind of journaling. You can also call this as a vision board thing or something. ठीक है. So this is mind mapping. हम सभी ने यू नो हम डायग्राम्स करते थे ना स्कूल में, that animals, then herbivores, carnivores, this, that. Then we used to separate, divide it into further categories, then further categories. So same thing is with mind map. Okay. अभी आप सब कुछ लिख सकते हो कि क्या 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 मुझे करना है, एंड देन यू कैन सब कैटेगराइज देम. कि जैसे इसने गोल्स लिखा है, ठीक है, अब गोल्स क्या है, इसने रिसर्च करनी है, लेक्चर देना है, कंक्लूजन्स निकालने हैं, या फिर कुछ हैबिट्स आपको जनरेट करनी है, तो कौन कौन सी हैबिट जनरेट करनी है, प्लान करना है, स्टडी करना है, कुछ सिस्टम क्रिएट करना है. सो जस्ट जैसा हमने गोल सेटिंग करा था ना, so just making it in a pictorial way is known as mind mapping. Some people are very creative and उनको जब कुछ क्रिएटिव चीज सामने दिखती है ना, they feel like doing it. So it's all upon you कि आप किस तरह से वो चीज करना चाहते हो. ठीक है. अब माइंड मैपिंग से क्या होगा, सब चीजें क्लियर है ना आपके सामने. अभी सोचो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं. इट विल ऑल बी दिस लाइक दिस क्लटर. बट अगर हम ये देखें, इट्स ऑल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. इट्स अ सेटल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रूम. क्लियर. ओके. सो दिस सेज डू नॉट वरी, जस्ट ट्राई टू ऑर्गेनाइज थिंग, बिलीव इन योर सेल्फ. अभी ऐसा नहीं कि आपने ये तो लिख दिया कि मुझे रिसर्च करना है, बट डीप इन योर माइंड यू आर थिंकिंग दैट मैं तो निठल्ला हूँ, आई कैन नॉट डू एनी रिसर्च, आई कैन नॉट फाइंड कंटेंट. So, mind mapping is one thing, and staying in a positive zone is another thing that you have to do it for yourself. Okay. Any doubt till now? So, we have covered
four types of journaling till now. Any doubt or any question till now? No question, no doubts. Am I teaching that good? Okay, great. चलो, let's move on to जिसके बारे में आजकल हर इंस्टाग्राम रील बात कर रही है, जिसके बारे में आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं. दिस इज अ नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, वर्ल्ड वाइड इशू, विच इज आवर मेंटल हेल्थ. कोई भी एक इंसान यहाँ पे है जो बोल सकता है दैट थ्रू आउट द डे, नॉट इवन वंस, आई एम अफेक्टेड विद समथिंग नेगेटिव मेंटली, or throughout the day I stayed in a 100% positive mindset. Anyone? No, right? और अभी तो हम ये सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन की. There are 365 days in a year. ठीक है, तो अभी ये मेंटल हेल्थ ट्रैकर कैसे हेल्प करेगा आपकी? सो यू डोंट हैव टू बाय सच फैंसी नोटबुक्स और समथिंग. आपने बस डे एंड में ना जस्ट जॉटेड डाउन कि आप सुबह कैसा फील कर रहे थे, दोपहर को कैसा फील कर रहे थे और रात को कैसा फील कर रहे थे. इफ नॉट दिस मच, इतना नहीं करना है आपको खुद के लिए, इतना नहीं करना है. देन जस्ट गिव अ ओवरऑल रेटिंग कि आज आप खुश थे, नाराज थे किसी से, या फिर बहुत गुस्से में थे, या सैड थे, वॉट एवर इट इज. जस्ट नोट इट डाउन. ओके, एंड ये 1 वीक जरूर करना. एंड देन जस्ट गिव योर सेल्फ रेटिंग कि 7 में से अगर मैं 4 दिन दुखी रह रहा हूँ या 4 दिन मैं गुस्से में रह रहा हूँ, तो एम आई इवन लिविंग माई लाइफ? राइट. सो अभी अगर आप इस चीज को जॉट डाउन नहीं करो तो आप क्या बोलोगे? कोई आपसे पूछे हाउ इज योर लाइफ, या इट्स लाइक चल रही है लाइफ, बट देन यू आर नॉट एड्रेसिंग. ओके, बट देन अगर आप 7 दिन में से 4 दिन आप देखो कि मैं दुखी रह रहा हूँ या गुस्से में रह रहा हूँ या सैड रह रहा हूँ या खुश नहीं रह रहा हूँ, यू विल एड्रेस दैट थिंग कि मैं क्यों खुश नहीं रह रहा हूँ, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट. सो यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट एंड यू विल वर्क टुवर्ड्स इट. ओके, सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ मेंटल हेल्थ ट्रैकर. नाउ ये तो हमने देख लिया कि मैं 4 दिन दुखी रह रहा हूँ, बट व्हाट शुड आई डू अबाउट इट? सो जिस भी दिन ना आपको लगे कि मैं बहुत सैड रहा हूँ या बहुत गुस्से में रहा हूँ, जस्ट एक ना अलग नोटबुक मेंटेन करना, लाइक छोटा सा नोटबुक विथ बहुत सारे पेजेस नहीं, छोटे से पेजेस. ठीक है, मतलब 50-60 पेजेस. ठीक है, छोटी सी नोटबुक एक मेंटेन करना. एंड जिस भी दिन यू विल फील लाइक कि ओवरऑल 90% ऑफ द डे आई वॉज सैड टुडे और आई वॉज इन एंगर, just write down whatever you want to release from yourself with a black pen, specifically black pen. ठीक है, और जब आप लिखोगे ना, एंड डू दिस एट नाइट, पूरे दिन के बाद डू दिस एट नाइट, एंड just write it down. I want to release this limiting belief about myself. I want to release the feeling of what others will think about me. Okay, so ये चीजें जब आप करोगे ना, okay, now you tell me how this regular exercise will help you. Okay, let's pick Shelly. How do you think this releasing exercise will help you? Definitely, it will help me in releasing my anxiety or my overthinking. Okay, I can, check my day to day, feelings, like how am I feeling, like मुझे कैसा feel हो रहा है, like am I improving or not. Like if I'm having anxiety issues and I'm writing down all the emotions on a daily basis, let's say for a 1 week, so after 1 week I will see like if there is any change in my overthinking or my anxiety issues or not. If not, then I need to rethink about it again, and like
Like I need to think like what needs to be changed, what needs to be done in a positive way, so that I can release that anxiety level, so that I can Yeah, yeah. perfect. So ये आपको अगर she has explained it very well, but then if I explain it further, तो अगर आप ये एक्सरसाइज करो, लेट्स से आपने हम्म, अभी मंडे आने वाला है ना, मंडे से स्टार्ट हम्म, करा, फिर आपने अपने आप को संडे को एनालाइज करा, संडे हम्म, रात को एनालाइज करा कि इस वीक में मैं 7 में से 4 दिन दुख ही रहा हूँ, बट देन हम्म, 7 के साथ आई हैव रिलीज दोज इमोशंस जिनकी वजह से मैं दुखी रहा हूँ, आई हैव राइट अबाउट इट एंड आई हैव रिलीज दोज इमोशंस फ्रॉम माई हेड। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वीक अपने आप को एनालाइज करोगे ना, तो वो 7 में से 4 दिन आप सैड नहीं होगे, आई कैन गारंटी दैट। ठीक है, आप 7 में से 3 दिन सैड हो सकते हो, देन 2 दिन, देन 1 दिन। सो दिस इज एन ओन गोइंग थिंग, you will be able to track yourself, and I can guarantee you this thing will help। ठीक है, I don't know if this thing is making sense to you right now or not, but when you will start doing it, आप खुद अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस करोगे। definitely I ओके, will या एवरीवन शुड। ठीक है, बिकॉज व्हेन यू विल रिलीज समथिंग आउट ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, बहुत कॉमन टर्म है आजकल एक, लेट गो करना। ऐसा कोई है जिसने इस टर्म के बारे में नहीं सुना, दैट यू शुड लेट गो दिस और लेट गो दैट? एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, वी शुड डू लेट गो, बट हाउ? ओके, either you meditate, either you do certain things, or either you can just practice this thing and release those emotions on a daily basis। हम रूम रोज साफ करते हैं ना अपना, ठीक है, हम उठते हैं, अपना ब्लैंकेट फोल्ड करते हैं, बेडशीट ठीक करते हैं, ठीक है, वॉट एवर, ठीक है, तो व्हाई नॉट आवर माइंड? इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? सो दिस इज अ वेरी 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 important yet simple kind of journaling। Any doubt in this? So this is another format wherein you can draw about it कि मैं इतना कचरा फील कर रहा हूँ मेरे माइंड में, but then next day you can draw a heart कि आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ मेरे माइंड में। Just compliment yourself, okay? So you can write down these kind of emotions। ऐसे journals भी मिल जाएंगे आपको मीशो पर या टेमू पर, ठीक है, you can buy these as well if you want to fancy something, but then if you don't want to do it, just maintain a simple notebook like this, like I do। ठीक है, so yeah, this is something very important, you can take a screenshot of it। ठीक है, what a limited mindset will do to you and what a growing mindset will do to you। ठीक है, like Harshada in start of the class said that I blamed myself, I felt guilty within myself कि मैंने नहीं करा, but then when you will be in a growth mindset, you'll not blame yourself for certain mistakes that you committed or not fulfilling what you intend to do at the start of the day। ठीक है, तो you can take a screenshot of this one and think about it। Okay, so this is something which I found yesterday, and immediately I took a printout of it and I pasted it on the board behind me. That when things change inside you, things change around you. Okay? अभी अगर मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास से एक बटरफ्लाई जा रही है, तो आई एडमायर दैट बटरफ्लाई कि ओ माय गॉड दिस इज सो कलरफुल दिस दैट, और मैं खुद ही एकदम क्लटर्ड माइंडसेट में हूँ, तो आई जस्ट शो ऑफ दैट बटरफ्लाई कि भाई क्या मेरे को क्यों डिस्टर्ब करी है। ठीक है, तो माइंडसेट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है जी, एनी डाउट टिल नाउ? It's sounding simple ना,
Although overwhelming हो सकता है because there are a lot of journaling methods, but then towards the end we'll figure out which one is the best for you. ठीक है? Okay. So sixth kind of journaling, which is very, very, very famous, but no one does it. Do you remember when we were kids, when we were in school, तो हम हर टाइम खाने से पहले प्रेयर करते थे. थैंक यू गॉड फॉर द बोल सो बिग, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड लास्ट में थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. ठीक है, डू यू रिमेम्बर दैट? ठीक है, तब हम बच्चे थे. I still do. बट अभी भी करती हूँ. आई हैव स्टार्टेड इट रिसेंटली एंड माई हस्बैंड सेज कि क्या स्टुपिडिटी करी है, दिस इज फॉर किड्स. बट नो, दिस इज नॉट फॉर किड्स, No. दिस इज फॉर You should be एवरीवन. thankful for या, everything. ठीक है. तो दिस इज ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. जिस दिन पर हमने मूड वो करा ना, मेंटल हेल्थ वाला जर्नलिंग, ठीक है, Hmm. तो जिस दिन पर आपको वो नहीं करना ना, इनफैक्ट यू शुड डू इट एवरी डे, मैं तो यही बोलूंगी. बट पीपल हु आर लेजी लाइक मी, ठीक है, Hmm. तो जिनको लिखना पसंद नहीं है या फिर हु फील्स लाइक मेरी तरह जिनकी राइटिंग बहुत 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 खराब है, ठीक है, तो हु डोंट फील लाइक राइटिंग अप अ लॉट, तो जस्ट मेक दिस ग्रैटिट्यूड जर्नल. सुबह से लेकर रात तक जिन भी चीजों के बारे में आप ग्रेटफुल हो, बस उन चीजों का एक बार थैंक यू कर सकते हो. ठीक है. अभी आप बोलोगे कि हम दिल में भी तो थैंक यू कर सकते हैं, व्हाट्स द बिग डील, ये लिखना क्यों है? बट what difference it makes when you write about these things, you'll know कि oh my god, I'm blessed with these many things, like the list is never ending. If I start noticing small things, that I can breathe properly. I don't have that windpipe going inside me and a ventilator attached to me through which I have to breathe. I can breathe properly. I'm grateful for that. I don't have to beg for my food. I have plenty of food. I have food choices. So जब आप ये छोटी छोटी चीजों को नोटिस करोगे and when you will just jot it down, तो what will happen? Okay, you guys will tell me. Who will tell me? Komal, you will tell me how this will help you. Hello, And how are why the you? other cameras are off, guys? Please switch on your camera. Yeah, Komal. How are you? I'm good. आप कैसे हो? ठीक हो? Yeah. अब कि जो भी हम लाइफ में कुछ भी हो वो लिखे, उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे पे? Yeah, I'm asking like if you'll do this gratitude journaling, if you'll start addressing small things that are good for you, तो आपके आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा if you'll do this? अ, मतलब कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है, जैसे आपने बताया कि हम छोटे होते प्रेयर करते थे, मतलब गॉड, थैंक यू गॉड, वो मतलब वो ग्रेटिट्यूड ही था. अगर हम ग्रेटिट्यूड ही सारी लाइफ रखें, वो ही ह्यूमंस लाइक वो ही है. मतलब अगर हम जो भी ये माइंड सेट, जो भी डिप्रेशन, ये सारा कुछ ये बाद में आया जब हम इस लाइफ में और बड़े हुए हैं. और मतलब Right, ग्रेटिट्यूड गॉड वो सच है. हम पहले इसीलिए हम थोड़ा सा माइंडसेट हमारा ठीक होता है कि हाँ हम ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, बिकॉज हम ग्रेटिट्यूड करते हैं जब हम स्कूल में होते हैं. right. This is very nice. I'm gonna use these lines. या बिकॉज जब हम फिर से डिप्रेशन सोसाइटी में, लाइक स्कूल, कॉलेज, फॉरेन, जॉब्स, ये सारी चीजें, फिर हम ग्रेटिट्यूड से दूर हो जाते हैं गॉड से. Right. So this is what it will do to you. It will या bring you in a positive mindset. या दिस इज ठीक व्हाट है? लाइफ इज. Yeah. So if you cannot, even journal about it, just say this one line every morning, every night, that thank you, God. I'm grateful for small things, big things, and everything in between. Make it It like a always mantra have for to yourself. connect with the God. Yeah, it can. Mm. हम छोटी छोटी लाइफ को लेके कभी छोटी छोटी चीजों को लेके कभी ग्रेटफुल ही नहीं होते.
Like, Hmm. if I talk about myself, I was not grateful about having a mother, you know. I thought like सबके पास ही होती है यार, what is there to be grateful about? But then when I lost her, it's like it was a big deal. Okay, so be grateful about even your parents, even your pets. Recently, I don't know if you guys know about it or not. Recently, we have lost our pet, and now we are realizing how important she was. Even though we knew before as well, but then when you lose something, you'll realize their importance more. So why not be thankful about all of those things at present moment, right? So you can just make this your mantra and just say this one line every day, every morning, and every night. Okay, and while having your meal, while we were kids, we did this thank you God wala thing. You can do that as well. It's all upon you. ठीक है? Yeah, so this says talk about your blessings more than you talk about your problems. ठीक है? जो कि हम नहीं करते हैं. हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं. वी ऑलवेज कंप्लेंट. अभी हाँ, अभी अगर हमको ये मैं क्लास बंद कर दूं और हम बोले ना कि लेट्स गॉसिप, सबके पास कंप्लेंट्स होंगी. मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, दिस. इफ आई टेल यू कि 100 चीजें लिखो, even 100 will be less. You'll write 200 things which are not right in your life. We'll go deep and deep and deep. मुझे ये कलर का टॉप चाहिए था बट ये कलर नहीं मिला. We'll complain about that as well. But we are not grateful about we can see, we can hear, we can smell. We are not grateful about these things, right? So count your blessings. Okay. Any doubt till now? No. Okay. Let's move ahead to a very interesting kind of journaling, which is reflective journaling, or you can call it higher self journal, or you can call it future self journal. ठीक है. अभी नाम को सुन के क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसमें? ओके. Meditation. ओके. Like sitting alone and thinking about yourself for and for the solutions, like if you are facing any problems, just to sit with yourself, like अकेले बैठ के थोड़ा शांत, like kind of meditation or something. या. एनीथिंग एल्स? पलक, आयुषी, switch on your cameras, guys. Vinita, Rushveen, Siva, Khushbu, all please switch on your cameras. So, we have heard a lot about this term higher self. What actually is our higher self? Anyone? Our soul. Okay. Where is this higher self? Have anyone seen it? Okay. Okay, I'll ask Palak because Palak ka camera off hai. So Palak, what do you think is our highest self? Or what exactly is this higher self journaling? By what name we can get this last one? Which one? Gratitude journaling, I guess you are talking about. She's not here, I guess. Okay, anyways. So, higher self, um, जिसको हम बोलते हैं ना मेडिटेशन. मेडिटेट करते करते we can go on to a state wherein we can connect with the higher purpose of ourselves. ठीक है, or what we call as soul purpose of ourselves. But we'll not go into that much deep. We'll keep it very simple. तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है
और हमको नहीं समझ में आ रहा होता वाई इज दिस थिंग हैपनिंग एंड व्हाट शुड आई डू अबाउट इट. सो फॉर एग्जाम्पल, you lost someone, okay, and you start questioning yourself ki why this thing has happened with me, okay, or why am I not getting any job, why am I not into a happy self of mine. So there are a lot of questions that go in our mind. ठीक है. तो what you can do, you can just address those questions, just write it down in a diary. ठीक है. And then just pray to your higher self that I'm not finding answer to this thing. Please help me address this problem. Please help me, get guidance about this problem. Okay. I'm not saying कि आपने अभी लिखा और आपको आज रात ही सपना आ जाएगा कि भविष्यवाणी हो जाएगी कोई कि इसीलिए ये हो रहा है, आपको ये करना चाहिए, ये रत्न डाल लो, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है. बट इनसाइड योर हेड आपको आंसर मिल जाएगा. एंड आई एम वेरी 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 श्योर अबाउट इट. ठीक है. इफ यू विल एड्रेस द प्रॉब्लम, आपने देखा होगा, आप कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक से एक एंजल नंबर आ जाता है हमारे सामने. ठीक है. और हमको हमारा आंसर मिल जाता है. दिस इज द सेम थिंग. ओके. दूसरे वर्ड्स में बोलूं, ये हायर सेल्फ को भी छोड़ दो. यू कैन डू दिस हायर सेल्फ थिंग. इट इज लाइक मैजिकल. यू विल नॉट इवन यू नो रियलाइज कि कैसे आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा. ठीक है. बट देन, ओके, आई विल जस्ट गिव यू दिस difference of ego self, which is all of us in our body, and this is our higher self. ठीक है. जिसके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है, जिसके लिए हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग है. So you can just take a screenshot of this thing and analyze it later when you will do this higher self journaling. ठीक है. Next thing which you can do about is talk to your future self or talk to your younger self. एक इंस्टाग्राम पर ना एक लेडी है who uploads this parenting content. तो उसने ना एक वीडियो डाली हुई थी wherein she was standing in front of a window and वो बाहर से देखती है कि कोई एक बहुत सुंदर सी कार में आ रहा है when she was a kid. ठीक है. और वो सोचती है कि बड़े होके मैं ये कार लूंगी. ठीक है. कुछ साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं. देन हर फ्यूचर सेल्फ एंटर्स, जो उसका प्रेजेंट है. ठीक है. तो उसका जो यंगर सेल्फ होता है ना, उसका वो चाइल्ड वर्जन, वो उसको देख के बहुत खुश होता है बिकॉज शी वॉज ड्रेस्ड वेरी सोफेस्टिकेटेडली एंड दिस दैट. एंड देन वो उससे पूछती है, उसका यंगर सेल्फ उसके प्रेजेंट सेल्फ से पूछता है कि क्या हमने ये कार ली. तो वो अपनी कीज दिखाती है, यस वी गॉट इट. ओके. तो अभी प्रेजेंट में मे बी उसको उस कार की वैल्यू नहीं समझ में आ रही हो कि हाँ ठीक है कार ले ली, क्या हो गया, सब लेते हैं. बट वेन शी मेट हर यंगर सेल्फ जिसका ड्रीम था वो कार लेना, कितनी खुशी वाली बात है, राइट. सो लेट्स से कोमल का ड्रीम था कनाडा आना. ठीक है. बचपन में वो सोचती थी. बट देन जब वो कनाडा आ गई, उसको हुआ कि ठीक है आ गई, क्या हो गया, धक्के तो खा रही हो यहाँ पे, क्या हो गया. बट देन जब आप आप सोचते हो कि कभी मेरा ड्रीम था ये कनाडा आना, यू विल बी वेरी ग्रेटफुल कि ओ माय गॉड आई हैव अचीव दिस थिंग. ठीक है. तो इस तरह से आप अपना एक फ्यूचर सेल्फ बना सकते हो, एक यंगर सेल्फ बना सकते हो जैसा इसमें बना है. एंड यू कैन राइट इट डाउन कि फ्यूचर में मैं क्या करना चाहती हूँ, यंगर सेल्फ में मैं क्या करना चाहती थी और मैंने क्या क्या कर लिया. ठीक है. दिस इज लाइक वेरी जनरल वे ऑफ बीइंग ग्रेटफुल. ठीक है. तो ये चीज आप कर सकते हो. इट विल हेल्प. मतलब जब भी आपके पास फ्री टाइम हो ना, यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. बट देन जो हमने पहले मेथड्स डिस्कस करे हैं, दोज वर मोर अबाउट रेगुलर थिंग्स. ठीक है. एनी डाउट इन दिस वन और एनी डाउट टिल नाउ?
ओके, तो अभी हमारे सिर्फ 3-4 मेथड्स रह गए हैं, बट देन अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क अवे। ओके, डू नॉट जस्ट ओवरवेलम योर सेल्फ विद अ लॉट ऑफ कंटेंट। अभी तक कोई भी डाउट है, यू कैन जस्ट क्लियर इट आउट, और वील Higher मूव self फॉर। generation. Yeah. Yeah, even I had little bit confusion in higher self wala method. ओके, Method. ठीक है, मैं If you बताती हूँ can tell एक what एग्जाम्पल। manifestation or वो affirmation क्या particular word में, that would be helpful. ओके, सो हायर सेल्फ जर्नल बेसिकली क्या है? हम भगवान से बातें करते हैं कि भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आपने मेरे साथ वैसा कर दिया, आप ऐसा भी तो कर सकते थे, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? सो सिमिलरली, instead of that भगवान जी term, we are connecting with our own self, with our soul। ठीक है, तो बेसिकली ये करना कैसे है? लेट्स से आपको जॉब नहीं मिल रही है, Yes. ठीक है, और आप बहुत परेशान हो कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो आपको क्या करना है? यू विल जस्ट टेक अ पेपर एंड उसके ऊपर टॉपिक लिखो, आपका क्वेश्चन लिखो, इनफैक्ट, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग अ जॉब। ठीक है, Mm-hmm. और उसके आगे जस्ट प्रे टू योर हायर सेल्फ और Mm-hmm. गॉड, वट एवर टर्म यू वॉन्ट टू यूज, जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको हायर सेल्फ ही लिखना है या जीसस लिखना है या अल्लाह लिखना है। वट एवर टर्म रेजोनेट्स विद यू, आप वो टर्म लिखो एंड से दैट, वाई इज दिस हैपनिंग विद मी, वाई एम आई नॉट गेटिंग दिस जॉब, गॉड प्लीज हेल्प मी विद दिस थिंग, और एटलीस्ट शो मी अ वे towards which I can move ahead and move towards a better life, better career, better profession। ठीक है, तो जो भी मतलब फर्स्ट लाइन में आपने अपना मेजर क्वेश्चन लिखा, जैसे जीमेल जब हम करते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, लास्ट में अपना रिगार्ड देते हैं कि थैंक यू इन एडवांस, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, एंड योर नेम। ठीक है, वो करो एंड देन जस्ट स्लीप ओवर इट, एंड within like no time, or within a day, within 2 days, within a week, you'll definitely get your answer। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई आके मेल करेगा कि ये लो, ये आपका आंसर है, ये आपका डॉक्यूमेंट है, आपने हमको मेल डाला था और ये आपका आंसर है, ऐसा नहीं होगा। यू विल जस्ट नो इट इन योर हेड कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, आपको खुद ब खुद उसके आंसर मिल जाएंगे। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं करेगा आपके सामने आके। ठीक है, अभी क्लियर है? ओके, सो कहाँ तक किया था हमने? या सो नेक्स्ट इज, जिसको हम आजकल विजन बोर्ड्स बोलते हैं या क्रिएटिव जर्नलिंग या आर्ट जर्नलिंग बोलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट मेथड। ठीक है, बेसिकली व्हाट यू कैन डू, यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट। ठीक है, आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हो। मैं, आपने देखा होगा, मैं इंस्टाग्राम पे मूड बोर्ड पोस्ट करती हूँ, ठीक है, उसमें कार्ड्स हैंग करके, या फिर इफ यू कैन, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, देयर इज अ विजन बोर्ड बिहाइंड मी। ठीक है, तो इस तरह की आप पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो या ऐसा बोर्ड पे पेस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट राइट अबाउट इट, बेसिकली बीइंग इन दैट जोन। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन कॉल एज creative journaling, picture journaling, art journaling। People like Ayushi, like we have seen her notes, right, Meet? We have seen her notes. She is very creative, unlike me or unlike so many of us. So, जो बहुत creative लोग होते हैं, जिनको pictures से, colors से बहुत प्यार होता है, तो वो लोग ऐसे ही journaling करें ना, it will work wonders for them। अब मेरे जैसे लोग इतना कलरिंग वलरिंग नहीं कर सकते, मुझे तो लिखने में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बट देन
पीपल लाइक यू गाइस कैन डू इट, जो क्रिएटिव है। ठीक है, अभी जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, जो हमने रिलीज वाला एक्सरसाइज किया था ना, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ कि आज मैं इतना ऐसा फील कर रही हूँ। ठीक है, एंड देन यू कैन जस्ट राइट अबाउट इट, लाइक शी हैज रिटन इट्स ओके बोल्ड में। ठीक है, एंड देन शी हैज रिटन सर्टेन थिंग्स, बट देन शी हैज ऑल्सो ड्रॉन कि अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ। सो बेसिकली इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। ठीक है, तो आप लोग क्या करना ना, जो भी आप जर्नल लोगे ना, अभी आई गेस अगर जितने भी लोग हैं 50% ऑफ द पीपल विल स्टार्ट जर्नलिंग, जितना मैं बोली हूँ उससे मोटिवेट होके, एटलीस्ट फॉर अ वीक और सो। तो जो भी आप जर्नलिंग करोगे, जो भी जर्नल लोगे, उसके फर्स्ट पेज पर जरूर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, या फिर अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखना, लाइक दिस गर्ल हैज रिटन। ठीक है, या फिर जो भी आप करना चाहते हो, लेट्स से यू वांट टू गो टू पेरिस, तो आप पेरिस की फोटो लगा दो। या फिर लेट्स से यू वांट टू बाय अ कार, तो आप कार की फोटो लगा दो, मतलब उसको देख के आपको अच्छा लगना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज क्रिएटिव वे ऑफ जर्नलिंग। ठीक है, आई गेस आयुषी विल रेजोनेट विद इट, है ना? चलो लेट्स मूव अहेड with, so yeah, this says that be the energy you want to attract. Okay, so if you will be in that kind of energy, you will definitely attract it. जब हम बहुत नेगेटिव एनर्जी में अभी सबको ये लगता है कि ना, ऐसा थोड़ी होता है कि हर टाइम पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, ये तो सिर्फ बोलने की बातें हैं। बट हम नेगेटिव भी तो रहते ही हैं हर टाइम, और नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करते हैं हर टाइम। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव एंड लेट्स सी इफ वी अट्रैक्ट इट और नॉट, राइट? सो someone was talking about this method, which is very common, affirmations, or which we call as manifestation journaling. आपने बहुत सुना होगा 369 मेथड, 11 into 11, 15 into 15, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, सो जिसका मन नहीं है ना बहुत लंबे चौड़े चिट्ठे लिखने को, यू कैन जस्ट पिक अप सर्टन एफर्मेशंस। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव। ठीक है, तो इस तरह की एफर्मेशन, जरूरी नहीं है ये एफर्मेशंस, किसी भी तरह की एफर्मेशंस जो आपके प्रेजेंट सेल्फ के साथ रेजोनेट कर रही हैं, जस्ट पिक अप दोज एफर्मेशंस। इनफैक्ट आजकल चैट जीपीटी को अगर आप बोलोगे ना कि दिस इज माई स्टेट, दिस इज माई प्रेजेंट स्टेट, आई वॉन्ट टू बी like this in future, so please give certain affirmations for me to attract these things. Chat GPT will give you affirmations, your personalized affirmations. You don't have to go to any reader or someone कि भाई मेरे लिए affirmations generate करके दो. No one will know you better than yourself. Okay? So किसी भी तरह की affirmations लो और उनको लिखो. But make it a daily practice. This is something which you can do on a regular basis. ठीक है, अभी जैसे ये वाला है, इसमें इसने क्या करा है, जैसे फर्स्ट इसने ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस लिख दिया, देन हेल्थ से रिलेटेड लिख दिया, देन वेल्थ से रिलेटेड लिख दिया, लव से रिलेटेड लिख दिया। तो इट्स योर ओन क्रिएटिविटी, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। देयर इज नो पर्टिकुलर मेथड कि आपको ऐसे ही करना है, आपको वैसे ही करना है, आपको यही पेन यूज करना है, आपको यही नोटबुक यूज करनी है, आपको यही ड्राइंग यूज करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 369 का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से आप कर सकते हो कि फर्स्टली 3 टाइम्स आपको लिखना है व्हाट इज योर डिजायर। ठीक है, जैसे इसने लिखा है 10 10 न्यू कोचिंग क्लाइंट्स। ठीक है, इसको 10 नए कोचिंग क्लाइंट्स चाहिए।
दिस इज अ डिजायर, अभी ये हुआ नहीं है, दिस इज समथिंग दैट शी डिजायर्स, देन दिस यू हैव टू राइट 3 times, देन 6 times, राइट योर इंटेंशन 6 times। ओके, तो उसको एक एफर्मेशन की फॉर्म में बना के आप उसको 6 times लिख दो। जैसे उसने लिखा है, आई हैव साइंड 10 न्यू कोचिंग क्लाइंट्स। पहले इसका डिजायर था कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद उसने एफर्मेशन लिख दिया, एंड देन शी हैज प्रिटेंडेड लाइक वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसने 9 times लिखा, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई 10 न्यू कोचिंग क्लाइंट्स। सो इसमें हो क्या रहा है, 369 क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? Anyone who knows the logic behind this 369? No one? So basically 369 का लॉजिक क्या है? फायर होती है जैसे, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, एक माचिस जलाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एक कैंडल जलाते हैं, लेट्स से, ठीक है, फिर क्या होता है, वो कैंडल धीरे धीरे मेल्ट होती है और उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैलती है, सो द एनर्जी इंटेंसिफाइज। वैसे ही हमने एक डिजायर लिया, छोटा है बड़ा है, हमारा एक डिजायर है जिसको हमने 3 बार लिखा, एनर्जी हमने यूनिवर्स में डाली, देन हमने उस एनर्जी को, लाइक कैंडल हमने जलाया, हमने उस एनर्जी को एक इनिशिएशन दिया, ठीक है, दैट आई हैव साइंड 10 न्यू कोचिंग क्लाइंट्स। ठीक है, अभी क्या है, वो एनर्जी आई, देन इट इंटेंसिफाइज, नाउ वी आर ग्रेटफुल अबाउट कि हमने ये चीज कर दी है। So it basically is intensifying the energy of whatever we want to achieve. Make sense? Do you mean what we want, what should we do, and what we got? Yeah. ठीक है, so this you can do, जैसे यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको 3 बार मॉर्निंग में लिखना है, फिर 6 बार आफ्टरनून में लिखना है, 9 बार इवनिंग में लिखना है, दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज योर चॉइस। आप चाहो तो एक बार में भी पूरा कर सकते हो। एनी डाउट? सो दिस इज जस्ट वन वे ऑफ जर्नलिंग। ऐसे ही आप 11-11 कर सकते हो कि एक ही एफर्मेशन को रोज आप 11 दिन तक 11 बार लिख रहे हो, तो इट इज डूइंग व्हाट, इट इज क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड यू। ठीक है, एनी डाउट? दिस इज समथिंग which can motivate you if you will put it in front of yourself that you have the power. Okay. Okay, next is a very interesting method जो आपको रोज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट ऑन न्यू मून, फुल मून, कोई ऐसा पोर्टल आया, 11-11 पोर्टल, 8-8 पोर्टल, या फिर वेन एवर यू फील लाइक। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रॉम्प्ट जर्नलिंग। ठीक है, आप अपने आप को कुछ भी प्रॉम्प्ट दो, किसी भी चीज से रिलेटेड, लेट्स से आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है या फिर आपको डेली ग्रैटिट्यूड देना है, तो आप अपने आप को कुछ भी प्रॉम्प्ट दो, लेट्स से व्हाट माय आइडियल डे लुक्स लाइक। ठीक है, कि मेरा दिन कैसा होना चाहिए, आइडियल डे कैसा होना चाहिए, कैसा होता है कैसा नहीं होता वैसा नहीं, कि आइडियल डे कैसा होना चाहिए। यू कैन जस्ट जर्नल अबाउट इट, सो गिव योर सेल्फ सम प्रॉम्प्ट्स। अभी दिस इज साउंडिंग वेरी नॉर्मल कि कुछ भी बोल दिया कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं है। सो लेट्स से दिस a lot of you might have this thing, हमारे बचपन में ना बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम उस टाइम एड्रेस नहीं कर पाते, बट देन इट क्रिएट्स अ बैगेज इनसाइड यू। ठीक है, सो यू कैन टेक अ प्रॉम्प्ट, आई थिंक एवरीवन शुड टेक दिस प्रॉम्प्ट एंड राइट अ लेटर टू योर
younger self, जो आपका बचपन वाला चाइल्डहुड था ना, राइट अ लेटर टू दैट चाइल्ड। ठीक है, हम कभी कभी अपने साथ ही बहुत गलत कर देते हैं। लाइक जैसे हर्षदा ने बोला, आई आई फील गिल्टी अबाउट सर्टेन थिंग्स। ठीक है, कि मैंने जर्नलिंग नहीं करा, तो राइट अ लेटर फॉर योर सेल्फ अबाउट दैट गिल्टी फीलिंग। ठीक है, दैट एंड गिव सम काइंड ऑफ explanation if you want to, कि I was busy in this thing and I'm sorry I couldn't do it, but I promise to my future self that I will make it better, I will do it regularly, I will make my life better. ओके, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हम खुद को forgive नहीं कर पाते, so you can take that prompt, um and you can write about it, that I forgive myself, I forgive my younger self about this thing, and I promise that my future self will be a better version of what I am right now. Okay, so this way you can take a prompt on full, रिचुअल बना लो अपना कि फुल मून पर ऐसा कोई एक प्रॉम्प्ट लेना है और ये करना है, बिकॉज रोज ये चीज आप करोगे तो आई डोंट थिंक a lot of us will do it, मैं भी नहीं कर पाती, but then you will have this kind of ritual कि हाँ मुझे full moon पर ये करना है या मुझे न्यू मून पर ये करना है, you will definitely do it. So how do you think this particular method will help you to, like हम बोल रहे हैं कि future self हमारा better हो जाएगा ये करने से, how do you think it will help you? So I'll ask Khushbu. This way we I will release the energy. Negative energy what we have done in our like childhood, and will make prepare ourselves for the future purpose. So we will get the clarity in our mind. So where I have to improve. yeah, like जैसा ये, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे मूव कर देती हूँ। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इनमें से जो भी प्रॉम्प्ट आपको अच्छा लगे आप इस पे जर्नल कर सकते हो, लाइक लेटर टू योर पास्ट सेल्फ, लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ, या फिर 5 odd things you like। मतलब कई बार होता है ना, ऐसे स्टूपिड थिंग्स लाइक करते हैं और लोग हमको बोलते हैं कि छी तू ये खाती है। ठीक है, तो हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि मैं ये खाती हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये लड़का पसंद है, मतलब ये तो, ये लड़का तो किसी को पसंद नहीं है, मुझे ये लड़का पसंद है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी, सो यू कैन राइट अबाउट इट एंड मेक योर सेल्फ फील बेटर, कि अगर आपको लगता है कि आप गलत हो अपनी चॉइसेस में, तो forgive yourself and move on। अगर आपको लगता है आप सही हो, तो make that feeling stronger, कि I don't care about what other people think about me, I'm right about whatever I'm doing. Okay, any doubt in this? Is this all questions I have to answer as, or I have to pick only one thing? Only one. Don't overwhelm yourself। अपने आप को एक ही दिन में अपनी सारी गलतियां मत गिनवाओ। Do not count your mistakes, just address your mistakes and make it better। Mm, in one aspect, one in list one topic, in letters one topic, or overall 60 questions overall one topic. Overall one topic, Okay, whichever thank one you you. feel like. It's not necessary that it has to be one of these. It can be anything. Okay. Clear? So we have came towards the very end of our journaling methods. Only 2 methods are remaining. Any doubt till now? No doubts? Okay, let's move forward then. Um, this is a very, very underrated method of journaling, but I use this method. This is a very, very, very powerful method, especially for the people who are born on 2, um, who's basically what is this?
बेसिकली जिनका बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर 2 है, who are governed by moon in any way, or the moon phases affect them a lot. This method is for them. Like I am born on 29, so I am governed by moon and also by number 7. So I am hampered by these moon phases a lot. Okay, so this is specifically for those people, मतलब उनको तो करना ही चाहिए, बाकी सबको भी करना चाहिए, because this is a very powerful method of manifesting. ओके, सो बेसिकली आपको करना क्या है, इतने सारे फेजेस को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ न्यू मून देखो और आप सिर्फ फुल मून देखो, ठीक है। न्यू मून पे आप जर्नलिंग करो, नॉर्मल जर्नलिंग, प्रॉम्प्ट जर्नलिंग या कैसी भी जर्नलिंग कर सकते हो। न्यू मून टू फुल मून, मून कैसा होता है, बढ़ता है, ठीक है। न्यू मून टू फुल मून, मून बढ़ता है, ठीक है। तो उस टाइम पर आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहो, जस्ट जर्नल अबाउट दैट, ठीक है। चाहे एफर्मेशन जर्नलिंग करो, चाहे क्रिएटिव जर्नलिंग करो, 369 करो, स्क्रिप्टिंग करो, जो भी करो, यूज एनी मेथड ऑफ मैनिफेस्टिंग, इनवाइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, 15 डेज का जो साइकिल होता है, ठीक है। देन फुल मून पर कोई भी फ्रॉम जर्नलिंग आप कर सकते हो, फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून, ठीक है। जहां पर मून रेड्यूस होता है, वहां पर यू विल जर्नल अबाउट थिंग्स दैट यू वांट टू रिलीज, like releasing a bad habit, or releasing your guilt, or releasing your bad emotions. So जैसे जैसे मून कम होता जाएगा, आपका वो इमोशन या आपका वो गिल्ट या जो भी है, दैट विल ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है। Can you इसको come और again? सो ओके, आई विल रिपीट इट, फ्रॉम न्यू मून टिल फुल मून, ठीक है, जो 15 डेज का साइकिल होता है। वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, लेट्स से आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट anything. I want to manifest a job. Okay. So write every good thing that you want to manifest. You can work on one particular intention, you can work on multiple intentions, however you feel like. Okay. Do manifestation journaling. जो अभी हमने affirmations वाला या manifestation वाला discuss करा था, do that. When the moon is in rising phase, जब वो बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जब मून का दूसरा साइकिल आता है, वेर इन मून इज रिड्यूसिंग, उस टाइम पर आपको जो भी रिलीज करना है अपने अंदर से, यू कैन जर्नल अबाउट दोज थिंग्स। चाहे वो कोई गिल्ट हो, चाहे वो कोई नेगेटिव इमोशन हो, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो आपके लाइफ का, चाहे वो कोई बैड हैबिट हो, लेट्स से आपको स्मोकिंग का हैबिट है, तो जर्नल अबाउट दोज थिंग्स विच यू वांट टू रिलीज फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, और वॉट यू वांट टू चेंज अबाउट योर सेल्फ और योर सराउंडिंग्स और वॉट एवर, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है, येट इट इज वेरी 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 पावरफुल मेथड। आई कैन गिव दिस इन राइटिंग। Can you tell me from new moon to full moon, which Yeah. general journal methods have to use? You can use affirmations, you can use gratitude journaling, you can use scripting, any method which is basically attracting certain things into your life. Okay. From full moon to new moon? And from full moon to no moon, ठीक है, जब अमावस होता है, from full moon to अमावस, you can journal about those things which you want to release. No, no. I'm asking about which method, for example. Any method you feel like. It can be in the form of affirmations, like I am releasing the habit of smoking. Okay, I am releasing जो अभी हमने पढ़ा था ना, mental health journaling or releasing journaling. You can do that. Letting go also. Whatever, yeah, letting go or whatever you want to release or whatever. Okay. Okay. ये सब करना,
एटलीस्ट 1 मंथ तो करना, एंड यू विल नोटिस द डिफरेंस एंड देन यू विल डू इट एवरी मंथ. ठीक है, एवरी मंथ देर इज वन न्यू मून, वन फुल मून. So follow this, um, cycle of 30 days and do it for yourself. Okay, now the very last method of journaling, which is how many of you wants to travel certain places? Or how many of you wants to, experience new things like recently I experienced skydiving. और ऐसा बहुत कुछ जो फन 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 चीजें आप करना चाहते हो, लाइक पेरिस जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, इवन द इम्पॉसिबल डेस्टिनेशंस दैट यू वांट टू ट्रैवल. सबके पास होगा ना कोई. Yes. ठीक है, तो दिस इज अबाउट दैट. ओके, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेंटेन अ जर्नल लाइक दिस. ये तो जर्नल भी नहीं है, ये सिर्फ एक शीट है. ठीक है, जहाँ पर यू कैन write about places that you have already visited, and then the places that you want to visit. ठीक है, and the places that you have already visited you can put pictures of that. ठीक है, तो अभी क्या होगा इससे? Anyone? What good will it do? Sweet memories, happiness while seeing that images. Motivates. uh yeah, what else? Plan things accordingly. Or What? we we train to plan things. Okay. We can train our mind to manifest or affirm that, like, what needs to be achieved. Like if we want to visit some place or some any and like if I want to go any country, so I need to affirm that, or I need to attract that energy on a continuous basis. If I like agar daily routine pe, like if we do affirmations like I will go there or I will go there, so we can attract that energy and put that energy in the universe. Yeah, and Having dreams will get increased. The subconscious yeah, mind का dream है, it's linked. Like we ये say, the positivity attracts positivity. So if we kept saying that I will visit that country in this year or in that year, so we like reflect those energies in the universe. yeah, basically being in that kind of energy. Yes, Harshada, you have a question? Our mind registers pictures more than the written words. So having those pictures will give us a specific goal, will keep on Yeah, reminding and help us manifest. right. And And this thing, people who have no goals in their life now, they should actually do it. Because उनको पता चलेगा कि मेरे कितने सारे goals हैं, मुझे life में भी कितना कुछ करना है, and that person will get a motivation that I have to do so many things in life and I have to work towards it. Okay, like we saw before, that you have to stay in that kind of energy to attract that energy. What is this method called? Travel journaling, or your dream destinations journaling, or what you want to do before you die, something, anything you can call it. Bucket list. Yeah. Okay, thanks. What else you can do is you can maintain a diary like this. Okay, and उसके first page से ही ना, पेस्ट अ पिक्चर, जो जो आपके ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ पे आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो एंड जहाँ पे आप करना चाहते हो. ठीक है, and जहाँ पे आप कर चुके हो उस पेज पर अपनी फोटो लगाओ उस डेस्टिनेशन के, एंड राइट अबाउट इट, दैट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, होटल कैसा था. मतलब यू विल फील वेरी गुड. एंड जब आप लो एनर्जी में हो ना, रीड दैट जर्नल and you will get that adrenaline rush inside your head and you will instantly be in a good mood. जब भी हम Bunny सैड जैसा. होते हैं, या राइट, जब भी हम सैड होते हैं, वो अपनी पुरानी पिक्चर्स देखें तो एक होती है ना खुशी,
So it is Ye- similar kind of thing. ठीक है? एक क्वेश्चन है, लाइक Yes. हम एक ही बारी लाइक वी नीड टू राइट इट डाउन वन टाइम और लाइक वी नीड टू रीड इट ऑन डेली बेसिस, लाइक हाउ कैन वी डू दिस जर्नलिंग? However you feel like, there is no rule to it. However you feel like. बिकॉज ये सेम चीज लाइक लास्ट वीक आई हैव ऑलरेडी डन, लाइक लास्ट वीक मैंने नोट डाउन, लाइक आई हैव राइट इट डाउन एवरीथिंग, लाइक काइंड ऑफ अ बकेट लिस्ट। ओके, तो पहले वो फोन में था तो आई जस्ट राइट इट डाउन इन द डायरी लास्ट वीक। सो अभी उसको लाइक आई नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, और लाइक व्हाट इज द प्रोसीजर टू फिर फॉलो? आपको उस चीज को मैनिफेस्ट करना है, देन हम्म। यस, पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। चाहे तो अपनी वॉल पर उस जगह के पिक्चर्स लगा दो, अपने विजन बोर्ड पर उस जगह के पिक्चर्स लगा दो, ठीक है? एंड इमेजिन कि मैं वहां जाऊंगी तो ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, ये खाऊंगी, वो खाऊंगी, ठीक है? yesterday only I saw a picture on Pinterest when I was downloading these pictures। तो वहां पे ना एक बंदे ने अपना पूरा वर्ल्ड मैप लगा रखा था, ओके? एंड उस जगह को पिन करा हुआ था, जैसा बोर्ड पिन होता है ना, उन पिन से पिन करा हुआ था दैट आई वांट टू विजिट दीज मैनी लोकेशंस। एंड जो जो लोकेशन उसने ऑलरेडी विजिट किया था वहां पे अपना पिक्चर लगाया हुआ था, ठीक है? सो ओके। दिस इज लाइक एन एप्रिसिएशन फॉर योर ओन सेल्फ कि वाओ मैंने इतना कुछ करा है, ठीक है? और यू कैन पोस्ट इट ऑन योर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम तो हम अपना रोज ही देखते हैं ना, तो हम्म। उन चीजों की स्टोरी डाल लो, या फिर जो आप कर चुके हो उन चीजों की पिक्चर्स डालो। लाइक फ्यू फ्यू डेज नहीं, फ्यू मंथ्स हो गए अब तो, ऑन ऑन माई बर्थडे, ऑन माई 30th बर्थडे आई एक्सपीरियंस स्काई डाइविंग, ठीक है? तो मेरा वो एक, लाइक वी कॉल इट बकेट लिस्ट ना, वो मेरे बकेट लिस्ट में था कि मुझे स्काई डाइविंग करना है, ठीक है? तो अभी आई वांटेड टू लाइक अप्रिशिएट माई सेल्फ कि मैंने ये चीज करा है, एंड वो चीज इतना डेंजरस था, आई डोंट वांट टू डू इट इन माय लाइफ अगेन, ठीक है? बट आई वांटेड टू अप्रिशिएट माई सेल्फ, सो आई पोस्टेड इट ऑन माई इंस्टाग्राम कि मैंने ये किया है, एंड पीपल सॉ इट एंड आई फेल्ट हैप्पी। सो इट्स योर ओन चॉइस कि आपको लोगों के साथ शेयर करके वो हैप्पीनेस फील करना है। इट्स योर ओन चॉइस। Be flexible about it. Do not surround yourself with so many rules. Okay. ओके। Okay. So similar to this is your dream journaling. ठीक है? इसमें आप अपने ड्रीम्स लिख सकते हो, जो आप करना चाहते हो उस तरह के ड्रीम्स। या फिर अनदर थिंग इज, जैसे आपको कोई ड्रीम रोज 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 आ रहा है, या बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है, या फिर कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं वेर इन वी फील लाइक इन ड्रीम्स का कोई मतलब है हमारी लाइफ में। दिस ड्रीम्स दीज पर्टिकुलर ड्रीम्स वांट्स टू गिव अ मैसेज टू मी। तो आप उन ड्रीम्स के बारे में लिख सकते हो। लेट्स से आप स्नेक देख रहे हो ड्रीम में रोज रोज, सॉरी, आप एक स्नेक देख रहे हो ड्रीम में रोज रोज, बट यू डोंट नो कि मतलब ये क्या सिग्निफाई करता है मुझे। सो यू कैन राइट अबाउट दैट ड्रीम, एंड उसके बाद उसका एक एक एलिमेंट उठाओ कि मुझे, ठीक है, स्नेक दिखा था, एक डेड लेडी दिखी थी, मुझे सनराइज दिखा था, एंड उन चीजों के बारे में गूगल करो कि इफ आई सी दिस इन माई ड्रीम व्हाट डज इट मीन। और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड PDF वर्जन ऑफ दिस बुक, ड्रीम डिक्शनरी, ठीक है? सो बेसिकली इसमें हर वो चीज है जो आप ड्रीम में देख सकते हो, एंड इट हैज मीनिंग्स टू इट, ठीक है? एंड देन फिगर आउट योर मैसेज कि ये ड्रीम मुझे बार बार आ रहा है, मुझे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। दिस इज वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ जर्नलिंग, जो आपको डेली बेसिस पे करने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन यू फील लाइक डूइंग इट, जब आपको लग रहा है कि इस चीज से मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है बट मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, देन यू कैन डू इट। ओके, so ओके। that's all with the methods. Any doubt in any method that we have discussed? Ma'am, I am confused to select which one have to follow. We'll figure that out. Abhi, we'll do it. But do you have doubt in any of the methods that we have discussed? No. Okay.
ओके नाउ क्विकली, हमने इतने सारे मेथड्स डिस्कस करे, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड 13-14 good methods, okay? So now I am sure I have convinced you that journaling will do something in your life. So now I want you all to either you can type or you can just say what are the benefits of journaling. अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, देयर वर वेरी फ्यू. But now we have discussed 13-14 methods. Now I want you to write it down or just say it out loud that what do you feel like are the benefits of journaling and how it can help you. Who will start? कोई भी कर लो start. Basically, if we want to achieve something or if we are getting any confusion, we can write it down to get the clarity. And if we want to manifest anything, we can also do journaling for that. So like if we, like if we affirm something on daily basis, or if we manifest like I want to achieve this and I want this thing in my life, or if I'll like after 1 year or 2 year I'll be like this or something like that. So we need to do journaling so that it can be a habit of being positivity so that we can release our negative energies also and to increase our positivity also. Like if we talk about gratitude wala jo humne point discuss kiya tha, so agar hum wo journaling, like if we do gratitude journaling, so it makes us positive in some sort of way. And we Yeah, we like we should be thankful for everything the god has given us. So thankful hona chahiye, grateful hona chahiye, and पॉजिटिविटी के साथ अगर हम जर्नलिंग करेंगे तो आई थिंक वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा यूनिवर्स से और हमें जल्दी वो चीजें अचीव होंगी. सो वी कैन अचीव दोस थिंग्स right, विद द पॉजिटिविटी ओनली. right. Okay, so I'll give you some pointers. If you want to write it down, you can write it down or you can just listen to it. But then if you want to write it down and whenever you feel like कि क्या ही फायदा है journaling का, you can just read it out to yourself. So first thing, it will give you mental clarity, राइट. stress reduction. Stress तो definitely reduce होगा. Your creativity will boost. You will experience personal growth. Your mental health will become better. You will be self-aware. क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्या नहीं चल रहा, what is right, what is wrong. You will be self-aware. No one else will tell you that this is wrong about you, this is right about you. You will know it yourself. Okay? It will help you in problem solving. It will improve your memory. It will help you in manifestation. Then you will become more creative. So on and so forth. I cannot just After problem solving, you said something in between. I missed. Help after in problem problem solving. Memory. memory improvement, Okay. manifestation, creativity, and you will regularize yourself emotionally. ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. यू विल Hmm. नो इट वंस यू विल स्टार्ट डूइंग इट. ओके, Yes. नाउ द मेजर क्वेश्चन, हाउ कैन यू स्टार्ट इट. इतने सारे मेथड्स कर लिए बट वेयर डू वी स्टार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना है व्हाई डू यू वांट टू जर्नल. ओके, सिट विद योरसेल्फ फॉर गुड 5 to 10 minutes एंड फिगर आउट कि आपके इंटेंशंस क्या है.
You want to attract something, you want to release something, you want to declutter your mind. ठीक है, तो क्या इंटेंशन है आपका जर्नलिंग का? लेट्स से योर लाइफ इज सॉर्टेड, आपका माइंड बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं है, बट यू जस्ट वांट टू मैनिफेस्ट थिंग्स। ठीक है, तो आपका इंटेंशन सेट है। तो अगर मैनिफेस्ट करना है मुझे, सो व्हाट मेथड आई विल चूज? इधर आई कैन चूज यू नो मैनिफेस्टेशन वाला जो हमने एफर्मेशंस वाला किया था, आई कैन चूज दैट। I can choose moon phases wala method. I can create a vision board for myself for whatever I want to manifest. ठीक है, so first step is to know your intention. Second step is to choose your method according to the intention. Third one is to start small. अभी मैंने आपको 14 मेथड्स बता दिए हैं। जरूरी नहीं आपको सारे करने हैं। अगर आप सब कुछ करना चाहते हो, जरूरी नहीं आपको आज से ही सब शुरू करना है। एक चीज से स्टार्ट करो, हैबिट डेवलप करो, एंड उसके बाद जस्ट जैसे हम वर्कआउट करते हैं, हम 15 मिनट से स्टार्ट करते हैं, फिर 20 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स, सो इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। अगर पहले ही दिन कोई मुझ जैसे को बोल दे कि भाई तू 500 किलो उठा ले, आई विल बी डेड ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, right? So everything will build on gradually. So you can just start small, appreciate yourself for everything that you do, for every small step that you take, and increase it gradually. Let's say first आज से आपने gratitude journaling start किया, ठीक है? आपने 3-4 दिन कर लिया, 5-6 दिन कर लिया। Now you feel like कि मुझे इसके साथ एक और चीज ऐड करनी है। ठीक है, लाइक मुझे क्रिएटिव जर्नलिंग भी करनी है, या मुझे प्रॉम्प्ट जर्नलिंग करनी है, या मुझे डीक्लटरिंग वाला जर्नलिंग करनी है, तो यू कैन ऐड इट, बट डू इट ग्रेजुअली। अगर आप पहले दिन पर ही सब कुछ कर लोगे तो दूसरे दिन कुछ नहीं कर पाओगे। इट विल अपेयर लाइक अ जॉब टू यू, फुल टाइम जॉब टू यू। ठीक है, सो थर्ड स्टेप इज टू स्टार्ट स्मॉल, देन यू हैव टू सेट अ रूटीन। ओके, इफ योर रूटीन विल नॉट बी देयर, देन वही होगा कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, चलो अब जाने दो। Yes, Harshita, you have a question? Should we maintain a separate notebook for every method? I would suggest, it's up to you, but I would suggest the release journal, wherein you Hmm? are releasing your emotions and you're talking about all those negative things and all. You should maintain a separate notebook about that, because you don't want to refer your negative emotions in your future, right? You are just trying to release them. But for other good things, चाहे वो creative journal हो, affirmations हो, you can keep a same notebook. But then it's Okay. up to you how you want to do it. This is what I suggest. Okay. And after writing in the release journal, should we burn the pages like we do into the letter to universe or something? Or should we just maintain the Again, up notebook? to you. If you want to feel like वो कौन सी मूवी थी, जब भी जब we मैं, met. yeah. ठीक है, so what she did, she teared it apart and just flushed it out. You want to do it, you can do it. You want to burn it, you can burn it. If you want to just keep it in a separate corner, you can do it that way. Got it. It's up to Thanks. you. It's not necessary to burn, but yes, Until if we you burn overcome it, those things and change, we can keep it and then do anything. See, until we realize what we have done, the negativities, overcome the negatives, solve the problems, we can keep it and then do anything with it. Got it. yes, Yeah. Otherwise, there yes, is no point in writing Mm. the problems and Right. writing the True. negative thoughts. yeah. So it's all up to you. Some people burn it. You can do that way as well. Like Okay. you just freeing yourself from all those things and you are just Hmm. telling universe, just take it away from me. Okay. Hmm. But if you don't want to burn it, like yeah, you have smoke detectors at your place, you don't have to burn it always, right? So Okay. it's all up to you. But I would suggest you maintain a separate journal for the releasing and negative emotions and all, and maintain a separate journal for everything positive and your manifestations and everything. Okay. Make Thanks. sense? Right? Yeah. Okay.
Then you have to set a routine. ठीक है? Set a particular time. Initially, set a particular time that I have to sit with myself and journal from this time to this time. Even if it is like 10 minutes, start with 10 minutes or even 5 minutes. Start with gratitude journaling. 5 minutes बैठो, just list down whatever you are grateful about. At same time every day. This will, generate a habit. जैसे हमारा बचपन से क्या होता है, हमको पता है कि इस टाइम पर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, इस टाइम पर हम लंच करते हैं, इस टाइम पर हम डिनर करते हैं, तो हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है। एक दिन ब्रेकफास्ट नहीं मिले तो पेट में ऐसा बहुत बुगामी होने लग जाता है, राइट? तो मेक अ हैबिट, गिव अ हैबिट टू योर बॉडी कि अगर जर्नल नहीं करा, योर बॉडी विल टेल यू भाई जर्नल नहीं करा आज, व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट डू इट। यू विल फील दैट हंगर फ्रॉम विद इन योर सेल्फ इफ यू विल जनरेट अ हैबिट। ठीक है? अदरवाइज यू कैन डू इट एनी टाइम, देयर इज नो रूल कि आपको इसी टाइम पर ही करना है, रात को नहीं करना, सुबह ही करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट देन इट्स जस्ट अ हैबिट डेवलपमेंट। ओके? एंड देन this is not a rule or something, but if you don't feel like doing anything, you can use prompts. जैसे हमने prompt journaling डिस्कस किया था, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं आज, you can just give yourself a prompt and write about it. ठीक है? So I guess people who had these questions that which method should we adopt, you might have got your answer, right? Okay. This is something that you can put in front of your journal. This is a letter to universe. Okay, basically what we are doing is we are setting an intention. ठीक है? This journal is for all my manifestations, gratitude and goals. Everything I write in this journal, I trust you will bring into my life or something better will come my way. So this last line is very important. Something we keep on wishing for a car, like um भगवान जी ऑल्टो दिला दो, ऑल्टो दिला दो, ऑल्टो दिला दो, पर भगवान ने आपको अच्छी कार दिलवानी है, हैरियर दिलवानी है भगवान ने आपको। ठीक है? सो जस्ट अपना इंटेंशन डालो, बट देन लीव इट ऑन टू यूनिवर्स की दिस और बेटर। ओके? सो डू नॉट स्ट्रक ऑन टू एनी इंटेंशन। Also, I want to Do not highlight limit this thing. yourself. Sorry, what? We shouldn't limit ourselves. Yeah, right, right. Okay. So last thing about today's classes, the myths. बहुत सारे myths होंगे बहुत सारे लोगों को, तो I'll just list down a few of them. ठीक है? उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है, I'm here to answer them all. ठीक है? So I will ask you guys. So first myth is journaling requires perfect grammar and spelling. Do you feel it's true? Actually, sometimes it is. I think if we are doing any affirmations or anything, so we can do this in like future tense, like I will, achieve this, or we can also write it down in the present tense that I have achieved this, that Yes, I have got my dream job, or like this. yes. So, grammar does make sense in journaling because अगर आप ग्रामर ही सही नहीं डाल रहे हो, ठीक है, मतलब आप चाह रहे हो कि ये चीज आपके साथ हो, बट आपका जो वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन है उसका मतलब कुछ और ही निकल रहा है कि ठीक है होना हो जाए, नहीं होना मत हो, ऐसा कुछ निकल रहा है, देन इट मेक्स नो सेंस। ठीक है? सो whenever you write affirmations, it should be in present tense. ठीक है? Imagine as if those things have already happened to you or those things are happening to you. And अगर हम spellings की बात करें तो yes, um, ऐसा कुछ मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, but then if you want to manifest something but आप वो
स्पेलिंग आपका कुछ और ही चीज बोल रहा है तो फिर घपला हो जाएगा ना. So I'm not telling you to put on a grammar check or spell check on your journal, but then it's like something you can just be careful about. Okay? But there is no such huge rules towards it. Second myth is you need to write daily to see benefits. Is it a myth? Is it true or is it false? We have to do it daily. True. Then unless it's consistent, today. I think it depends on the method. Yeah, so it's I can say it's partially true because Hmm. इफ वी आर डूइंग मून जर्नलिंग, ठीक है, तो हमने Hmm. डिसाइड करा कि हम 15 दिन ये करेंगे बट देन वी ब्रेक इन बिटवीन, तो फिर कुछ सेंस नहीं बनता ना उसका. बट देन इफ Hmm. वी आर डूइंग लाइक गोल सेटिंग वाला कुछ जो हमको मंथली बेसिस पर करना है, देन Hmm. देयर इज नो सच कंपल्शन कि आपको रोज करना है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द मेथड एंड द थिंग्स दैट यू वांट टू अट्रैक्ट. Right. ठीक है. थर्ड इज जर्नलिंग इज ओनली फॉर राइटर्स और क्रिएटिव पीपल. No. Everyone can do it. That's why I mentioned on the message as well that this can be for anyone and for every age group. Because किसी भी एज ग्रुप में जब हम बच्चे थे तभी भी हमारी विशेस थी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तभी भी हमारी विशेस होंगी, या फिर हमारा ब्रेन तभी भी ट्रबल में रहेगा. ठीक है. सो देर इज नो सच थिंग. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. नो राइट. Not in सो early, yes, in early days. As time goes, it may not until we get comfortable. yeah, initially it might feel like a duty or responsibility, but then once the habit is developed, it will be a part of your life. Yeah. ठीक है. एंड टाइम इज योर थिंग. आप 5 मिनट भी कर सकते हो और 2 घंटे भी कर सकते हो. ठीक है. The last thing is journals must follow a specific format, which we have already discussed. There need not to be a particular format. Okay. So there are some tips which I will just फटाफट से give you. First thing, keep your journal handy. ऐसा नहीं कि आप एक कमरे में बैठे हो, आपने जर्नल चौथे रूम में ऐसा छुपा के रखी है. तो जो लोग मेरे जैसे बहुत लेजी हैं उनको तो आलस ही खा जाएगी कि अब कौन उठ के जाए, कौन इतना जाके पेन लाए जर्नल लाए और फिर लिखे. सो कीप योर जर्नल वेरी हैंडी वेर you can reach it even if you are in the laziest of your mood. ठीक है. Second is be honest and non-judgmental with your thoughts and feelings. ठीक है. अभी हम खुद को बेटर करने के लिए ही तो जर्नल कर रहे हैं ना, तो हम खुद को ही जज करेंगे तो फिर क्या फायदा है. Yes. ठीक है. बी ऑनेस्ट. जो भी है आपके अंदर, चाहे वो अच्छी चीज है बुरी चीज है, जस्ट बी ऑनेस्ट एंड बी नॉन जजमेंटल. एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लोर डिफरेंट स्टाइल्स. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक स्टाइल के साथ चिपकने का जरूरत नहीं है. यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ. Okay. Last one is set realistic goals. This is very, 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 very important. Most important highlight कर लो. Set realistic goals. ठीक है. आज आपकी सैलरी let's say 5,000 है and you are not doing anything. आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट लिख रहे हो कि I will be equivalent to Ambani next year. My financial state will be equivalent to Ambani. So either you have a like roadmap towards it or just be realistic. It's not a magic. ठीक है. So be realistic with your goals. So yeah, that's it from my side. And if you have any questions, now you can ask your questions. Can I drop? I have another meeting. Yeah, yeah. Yeah, thank you so much. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Any questions that you guys have, you can ask them out.
No questions? Can you please explain that future me wala point once again? Okay. So, future me as in, let's say आप आज क्या डेट Like है, आपने 27 दिसंबर पिक्चर ट्वेंटी शो ट्वेंटी किया फोर था। हम्म। You एक want to see the नहीं, picture? एक पिक्चर शो किया था जिसमें था कि मेंशन था कि व्हाट शी डज ओन्स एंड लाइक्स, लाइक उसने क्या क्या अचीव किया, वो कार का एग्जांपल दिया था आई थिंक। Yeah, that was a Instagram reel जो कि मैंने बताया था आपको. हम्म। तो it's just like उसमें your younger self was talking to your future self कि हमने उस टाइम ये ड्रीम देखा था और अभी we have achieved it. So it's just like an appreciation. But then, let's say today you want to manifest certain things. So, you are writing to your future self that in this much time or by this year, I will achieve these things. So, and you can ओके। also say that, you can also pray that give certain opportunities so that, I can achieve these things. Something like that. So in this, basically, I need to write it down for my future, like if I have some goals to achieve, Yeah. and after that, I need to appreciate that Yes. I have achieved this. Like I should be thankful, right? Yeah. And you can use it in this way as well. Like, if you did something and you feel guilty about something, let's say, okay, कि आपने किसी को मारा या फिर आपने किसी को कुछ बोल दिया या फिर आपने किसी का कुछ बुरा कर दिया, and you are guilty about it and you regret doing it, but you cannot talk to that person जिसके साथ आपने वो किया. ठीक है. सो यू कैन जर्नल अबाउट इट दैट dear future self, I'm sorry about this thing that I did in my past. I forgive my younger self for doing this thing, but I will take care of these things in future and definitely I will be a better person. Okay. ठीक है. So you can be as creative as you can. If you need PDF, you can just send me your mail address. I'll share the PDF as well of Okay. these pictures or Hmm. these papers. ठीक है. Any other question? You said that I will give some pointers, it will be useful for you like that. Yeah, I gave those pointers now that keep your journal handy, keep realistic goals, be honest, this, that. The things that I just discussed. You said memory like that. What are those pointers? Those were Memory? benefits of journaling, Yeah, those were benefits of journaling. like mental Okay. clarity, creativity, personal growth. I'll share the PDF. You'll get your answers in that as well. I have explained everything in that PDF. So recording will not be shared, but then if you want these pictures or you want the content PDF, you can just drop down your email address in the group and I will share this PDF. Okay. Any other doubt? एक क्वेश्चन लाइक ऑन अ नॉर्मल बेसिस, लाइक ऐसे होता है कई बार कि लाइक कुछ लोगों की वजह से लाइक आप लाइक हम खुद बहुत अफेक्ट होते हैं, राइट? Yeah. और कई बार क्या होता है, माइंड में वो चीजें जो स्टक हो जाती, लाइक हम मूव ऑन नहीं कर पाते कि लाइक उसकी वजह से ऐसा हुआ, लाइक वी थिंक लाइक दैट, राइट? सो वो बहुत अफेक्ट होता है, उसकी वजह से कई बार एग्जाइटी भी होती है, लाइक सो उस चीज से मूव ऑन करने के लिए बेस्ट मेथड क्या रहेगा? लाइक Best व्हाट वुड method is release journaling. बी? ओके। हाँ. जिसने जो कह दिया जस्ट रिलीज इट. और आप उस चीज के बारे में जिस भी तरह से बुरा फील कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, लेट्स से योर मदर इन लॉ जस्ट टोल्ड यू व्हाई हैव यू नॉट डन दिस सिंदूर थिंग.
ठीक हम्म है, तो अभी आप खुद को ही क्वेश्चन कर रहे हो, बट वंस यू राइट इट डाउन, वंस यू रिलीज दोस थॉट्स ऑन दैट डे ओनली। अभी क्या है, हम्म जैसे वो दिल्ली जाओ तो वो गार्बेज वाला एक पहाड़ सा आता है ना, ठीक है, हम्म तो वो बढ़ते 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 कितना बढ़ गया। हम्म तो सेम थिंग गोज विद योर थॉट्स एज वेल। एक नेगेटिव थॉट आएगा और हम्म वो बढ़ते 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 बढ़ता रहेगा, बट वो इतना ज्यादा नहीं बढ़े उससे पहले ही जस्ट रिलीज इट आउट फ्रॉम योर सिस्टम। बट कई बार क्या होता है कि लाइक आई नो लाइक मुझे पता है कि लाइक वो चीज, और कहीं ना कहीं आई हैव एक्सेप्टेड दिस लाइक मूव ऑन भी कर लिया है, बट कई बार स्टक रहती है वो चीजें बैक ऑफ द माइंड। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो रिलीज हुआ है नहीं हुआ है, लाइक मूव ऑन हुआ है कि नहीं। वो चीजें से लाइक ऐसा है कि पास में छोड़ दिया है कि हाँ वो चीज अभी नहीं है मेरी लाइफ में, राइट। बट स्टिल कभी कभी वो चीज जो है हिट व्हेन करती है, वो चीज ओके, लाइक अगर दिमाग में ऐसा स्टक रहती कोई बहुत मेजर चीज है, लाइक बहुत मेजर इंस्टेंस है जो हुआ है आपके साथ, आप उसको एक दिन है। जर्नल करो, इट विल अपेयर बिग। 2 दिन करो, इट विल स्टिल अपेयर बिग। ठीक है, 3 दिन करो, 4 दिन करो, 5वें दिन यूल फील लाइक कि ठीक है, आई शुड लेट इट गो, बहुत हो गया। सो इट्स लाइक अ डेली एक्टिविटी विच यू हैव टू डू। अभी अगर हमको कोई स्क्रैच भी लगता है ना, उसको ठीक होने में, हील होने में 4 से 5 दिन लगते हैं, देन वो निशान रह जाता है। फिर हम उस पे कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, उस निशान को हटाते हैं। ठीक है, तो सेम गोज विद आवर माइंड। इट्स जस्ट दैट वो जो फिजिकल वुंड्स होते हैं ना, वो हमको नजर आते हैं, मेंटल वुंड्स हमको नजर नहीं आते, तभी हम उन पे इतना काम नहीं कर पाते। बट लाइक फिजिकल वुंड्स, मेंटल वुंड्स ऑल्सो टेक टाइम टू हील। हम्म ठीक है, सो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। एक दिन में कुछ चेंज नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू नाउ ओनली। एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, 2 दिन में भी कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते में हो सकता है कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएं। So it's an ongoing process. So this black thread is, um, I don't know, my mother-in-law gave it to me. I don't know what exactly it is, but I'm just wearing it. So it's basically for protection. हम्म Is there Any anything other? like that on in this day we have to tie on, in this day we have to remove that black thread? No. It depends actually. Like if you have got it from some spiritual place, so you can keep on wearing. But then if you have tied it for a specific intention, so when that intention comes true, you can remove it. So it depends. But for evil eye, Sorry. but for evil eye, evil Yeah, evil eye also this thing works. But then for evil eye, you can wear crystals as well. So talking about crystals, whenever you do manifestation journaling, you can keep a clear quartz crystal with yourself. Clear quartz is known to be a master manifester. ठीक है, so it will clarify your thoughts, it will help you in manifesting. ठीक है. One last thing which I want to mention here, like I told you, set realistic goals. So let's say you want to get married, okay? So I would highly recommend, even if you have a boyfriend, even if you have a long-term relationship, don't manifest that particular person with his or her name. ओके, जस्ट डिफाइन कि आपको आपका पार्टनर कैसा चाहिए। ही शुड बी टॉल, ही शुड बी फेयर, ही शुड बी लाइक दिस, ही शुड बी लाइक दैट, बट डू नॉट डिफाइन द नेम। ओके, मे बी यूनिवर्स हैज someone better for you. So don't limit, again, don't limit things by mentioning a particular person's name. ठीक है, and one disclaimer that I will give you all right now, that manifestation is not a magic. Okay, you still have to do your karmas. ठीक है, यूनिवर्स विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू अचीव योर गोल्स, टू अचीव योर manifestations, but then you have to do your karma. So let's say you want to eat a cake. Okay, universe has done something and universe has sent you to a bakery, but there you did not eat the cake.
आप ऐसे ही बिना केक खाए वापस आ गए, बट यू स्टिल विश टू ईट अ केक, तो यूनिवर्स ने आपको एक बर्थडे में भेज दिया, आपने फिर भी वो केक नहीं खाया, तो इट्स योर कर्मा एज वेल, आपको खुद भी एफर्ट करना पड़ेगा, हर चीज मैजिकली नहीं होगी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, so I hope this session helped you. If you have any further questions, you can ask me in the group. It's open to everyone. And you can also share your journals or anything creative that you do on that group so that everyone can see it and people can get ideas about how can they do it. Okay, and if you have any feedbacks or suggestions for me, you can also drop them in the group. Okay. Okay, then I'll see you. And Thank the you so thing much. that I mentioned, yeah, welcome. And the thing that I mentioned that I will have something special for you guys. I'll drop that thing in the group. But मैं अभी बता देती हूँ. चलो ठीक है, मैं ग्रुप में ही बताऊंगी. ठीक है, so that everyone can see it. Okay. Okay, guys. Bye bye. Have a great year ahead and happy journaling, happy manifestations. And कोई भी question हो, कोई भी doubt हो, you can always ask me out in the group or one to one wherever you feel like. Okay? Okay, Okay, thank you, bye ma'am. bye. Bye. You're Thank you. welcome. Bye. Thank you. Bye bye.